So actually today class में function deal करेंगे. Let's talk about function. See, function थोड़ा सा पहले इसके बारे में देखते हैं, function को introduction करते हैं, and then we will see programming and all. Okay, so I will take at least maybe 6 or 7 videos for function. Okay, so हम deep पे जाएंगे function को और function के जितने भी standard problems है, जो types है वो सारा देखेंगे Python में especially, और उसके बाद जो special function है जैसे lambda function, map वगैरह filter वो भी सब भी देंगे last में. Okay, so maybe 4 to 5 videos बनाने पड़ेंगे. So what is function? See, just like a box. Okay, suppose you are making a box. Okay, and then you are giving any data to maybe there's like any machine, जैसे गन्ने की machine. Okay, here हम गन्ना दे और यहाँ से juice like this. Okay, basically function जब एक तरह से box will create a machine into the box. उसके बाद हम कुछ input special input दें जो हम डिजाइन इसके लिए डिजाइन करें, like गन्ने की मशीन है तो you have to give गन्ना, है ना. सो सेम वैसे ही आप एक बॉक्स बनाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए और उसमें डेटा डिसाइड होता है कि ये प्रोवाइड करेंगे और जो आप प्रोवाइड करोगे फिर उसके हिसाब से वो आउटपुट होता है. दैट इज बेसिकली फंक्शन. सो व्हेनेवर नीडेड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम वी विल डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन. दिस कॉल्ड फंक्शन. ओके, सो बाकी अदर लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा हो तो लाइक दिस. सो पाइथन में फंक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन द फंक्शन? सो यू हैव टू राइट डिफ. लाइक सपोज दिस इज द, you have to start from here. So you can write diff. Diff means define, and then you have to give the function name. Suppose you are giving f1. F1 means this is your function name, और ये कुछ भी हो सकता है, like f1 India, कुछ भी आप लिख सकते हैं. And then you have to give parenthesis, colon, and then you have to start the program from, like either you can give a tab from here to reach here. Either if you click from here, enter it, click here. Otherwise, you can give 4 space and you can start writing your program into the particular thing. So now it will become a box. This will become a box, and whenever you want to call this, you have to just write F1 and it will automatically work. This is your basic architecture of a function. Okay. Now, if you want to give some data into that particular function, so you have to write like here. You can write it x. Suppose you are writing maybe x here, so you can give x here. Okay. Suppose you want to give two data, then you have definitely x comma y. Suppose you want to give three data, four data, and we will see how can do this. Both easy hai. Okay, so we will see that that also. How can we give more than two data? Or maybe like you want to pass maybe your CSV file, or maybe you want to pass your list, top or anything. So we will see that. Don't worry, one by one. But this is the fundamental basic architecture of making a function. So we will define that function diff every time you write diff. Then you have to write the basic function name. What is your function name? You have to write here function name and then give a parenthesis. Suppose आपको कोई data pass करना है तो you have to write here like this. And then you can write a program here. And then after, suppose आपने data pass किया तो जब भी आप call करोगे, suppose you write here 5, so x automatically 5 will come and it will start working on this like this. Okay, so this is the fundamental architecture of the function. We can design function like this. So और डिटेल में आने से पहले लिस्ट को जुपिटर नोटबुक और एक छोटा सा फंक्शन पहले हम बनाते हैं स्मॉल सा, और फिर उसके बाद वापस से नोटपैड पर आके डीप में बात करेंगे इस बारे में. ठीक है. और फंक्शन में कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जैसे जावा में लैंग्वेज होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं है. कोई और चीज कैसे है, लाइक यहाँ पे कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो कैसे, लाइक इवन इन इंटरव्यू जनरली दे आस्क व्हाट इज लाइक इन पाइथन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और नॉट. सो वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शन के हिसाब से. सो वी विल सी दैट आल्सो. ओके, so let's go to the Jupyter notebook and try to write a simple function program. एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे रख सकते हैं. So let's go to Jupyter notebook just a minute. So let's start here. Suppose I am writing a function. See, I am defining a function diff. You can give any name. Suppose I am giving f1. Like you can give any name, just like this. Then I am giving the column, and suppose you can click here, so it automatically come here. Otherwise, you can click a tab, it will come here. Other will give 4 space, come here. Okay. So anyway, we can do this. So I'm just giving the giving the enter and I'm putting here. I'm writing print, but I'm writing just simple print India. Very simple. And whenever I am
calling this function, whenever I am calling this function, it will automatically print here. I am not returning here anything, just trying to print here. We will see that also in the coming videos की return क्या होता है, why we need to return, write return. So यहाँ पर अगर return देखो तो none है actually, by default in Python return none होता है. So we will see that, don't worry. So we just start करते हैं, ठीक है, for very fundamental, and then we will reach the next level. Okay. So this is very simple function. Suppose let's write little more. Like suppose I am writing a diff function, diff f2, and suppose I am passing one data x, and then what I'm trying to do, I'm trying to make suppose like writing x is equal to x plus maybe 10, and just जो भी data उसमें 10 add करता हूँ, and then I'm printing x in this. And suppose I'm calling maybe f2 is equal to just say 5. You see this? This is basically it's become 50 like 10 plus 5. Okay, this is a very simple program or function. Anyway, so we can pass any data to function and then we do the analysis and return this. So here I'm not returning anything. अगर आप इसका return देखोगे that is none only. Okay, by default the Python return is none. So we will see that in coming lecture की return क्या आता है. But this is a very simple function program. Okay. अगर मैं ऐसे बोलूँ सपोज लेट्स पास टू वैल्यू टू द फंक्शन, चाहे कोई ऐसे बोले कि आप एक फंक्शन बनाइए जिसमें कि मैं दो वैल्यू पास करूँ और उसके बाद वो फंक्शन रिटर्न करेंगे इसमें से बड़ा कौन सा. वेरी सिंपल प्रोग्राम. जस्ट ट्राई टू डू सच क्वेश्चन आल्सो सपोज फॉर जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस कि आपको फंक्शन में थोड़ा सा समझ में आए, और अगर आपको बेटर समझना है तो जस्ट पुश वीडियो हियर एंड राइट दिस फंक्शन प्रोग्राम. बहुत सिंपल है. अगर आप पहली बार लर्न कर रहे हो आपको आता है तो ये तो वीडियो आप स्किप भी कर सकते हो. नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फंक्शन करूँगा. अभी तो पहली वीडियो तो आई एम ट्राइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ओनली एंड ट्राई टू मेक एज सिंपल एज कि आपको थोड़ा समझ में आए जो पहली बार पढ़ रहे हैं फंक्शन. ठीक है. सो राइट डिफ एंड देन आई एम राइटिंग सपोज f3 एंड पासिंग टू डेटा x, y, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड कि ये मेरा जो फंक्शन काम क्या करेगा. इस फंक्शन काम होगा जब मैं दो डेटा पास करूँ तो बताए दोनों में से कौन सा बड़ा है. ओके, सो लेट्स डू दिस. आई एम राइटिंग इफ x is greater than y, so definitely print bigger number is, and then say suppose here x, else you can write here else. So आप already condition से familiar हो गए if और else है. नहीं होंगे तो मेरे prior videos पड़े होंगे conditions की तो आप वहाँ देख सकते हैं. You can write if and all. So this is very simple. So I'm writing here if x is greater than y, then bigger number is x, else bigger number is y. Okay, so just very simple thing. Let's run it and let's call this function. So I'm calling this function. I'm giving two data, like suppose I'm giving maybe 3, 7 and it's 12. So the bigger number is 7. Suppose I'm writing like maybe like this. See, suppose I'm calling this time. I'm giving maybe it's 10. So now it's working. See this. The bigger number is 10. So this function is working. Correct. It's very simple. Actually, purpose is very simple to कि आप लोग function कैसे बनाते हैं. How can build a function in Python. Okay, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है फॉर जिसको बिल्कुल नहीं आता वो इसको समझे. और यू कैन राइट सम प्रोग्रामिंग फंक्शन. देखो प्रोग्रामिंग सीखने से अच्छा क्या है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस. जितने आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे उतने वो प्रोग्रामिंग बेटर होगी. सो इवन सपोज like you want to write maybe like you want to provide 3 data, 4 data, you can provide this. So it's a very simple lecture, so I'm not going to that, but we will see that कि कैसे अगर मेरे पास 4 से ज़्यादा नंबर हो तभी कैसे even like जैसे आप मशीन लर्निंग में करते हैं. Suppose you want to write a function and you have to pass a CSV file. Okay, so we can do that also, right? So we will see that also, okay, in function. So let's write a simple another simple function program and let's pass 3 data, 3 data pass करते हैं and then we see कि इसका multiple क्या होगा. Let's see very simple program. So let's see, let's write a function maybe f4 is a function name. Whenever you have to write a function, first you have to write diff, then a space, function name, then put the parenthesis. Here we are passing 3 data x, y, z. Okay, in coming lecture I will show you कि हम एक ही या दो ही करके ज़्यादा कैसे हम और डेटा पास करते हैं. But here I'm going in a simple way, and now we have to print the multiple of this. So just write print x multiply y multiply z, and let's call this f4 and giving 2, 3 and 4, and this is basically we are getting the number. Okay, so it's so simple actually. If you are saying it's very simple to write a function
So let's go to more detail. Let's try to go into deep into this. See how we are passing the data. See, suppose I'm passing this data here and it's going into x. This is passing with 3 and going into y. This passing 3, 4 and it's going into z. See carefully. See carefully. Like I'm writing x is equal to 3 here. Okay. Little bit I'm just try to see carefully. Actually मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि उसका एप्लीकेशन मैं यहाँ पे देखूँगा. Suppose I want to know कि 3 कहाँ स्टोर हुआ है. Suppose I'm writing print ID of X series. So it's basically this is the ID, this is the location जहाँ पे 3 सेव हुआ. Even if you are writing on cloud, maybe on Google Cloud or Amazon Cloud, you'll find that ID. Okay. This is right now I'm working on my local machine. And suppose this I'm giving another data like I'm writing here 10. See, so see this is another this is ID like यहाँ पे देखिए ये ID है और ये ID से location. See, 3 is stored somewhere, 10 is stored somewhere, but if now I'm writing print x series, so it will return 10 basically क्योंकि अभी हमने इसको इनिशियलाइज किया 10. Okay, और addresses changes. You know, just write again. You know, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अपने एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे है. Now let me do one problem. Suppose I'm writing x is equal to 5 here. Actually मैं क्यों कर रहा हूँ बताने के लिए कैसे हम डेटा पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर. Okay, so let's see this. I'm writing diff. I'm writing a function maybe f5. I'm writing here maybe another name y, maybe x anything, and then I'm saying here x is equal to 10. Okay, and I'm saying print x just see this. I'm saying print x. Don't pass any value like x. Okay, and here also write print x. Now I'm calling this function f5. Let's call this function and then again print x. Okay, see carefully. If I run it, अब देखो x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पे 5 है 5 आया, यहाँ पे अभी हमने प्रिंट किया तो ये वाला 5 आया. इसका मतलब फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू दिया है, जो वैल्यू दिया है वो जो है इसके अंदर आया, वो बाहर नहीं है. ठीक है, समझ लो. वो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और एक्चुअली पाइथन में होता भी नहीं है, वो कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है. वो टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. आई एम टेलिंग यू कि जो आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिसाइड करोगे उसको बाहर एक्सेस ऐसे नहीं कर सकते. Like writing x is equal to 10, so I'm not accessing 10, I'm accessing 5 still. But suppose I'm writing here global x series. I'm writing global x. How series? Now I'm able to access this state, so this become global. Okay, just giving you simple example कि if you want to कि आप कोई variable assign करो function के अंदर और उसको access करना है बाहर से, so you have to write global. Okay, correct, done. देखो this ये जो BTS का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको एक आइडिया लगे कि हाउ वी आर डूइंग, हाउ वी आर like define the function. Okay, just I'm defining here the function. In the next video I will cover deep part, then again deeper and deeper. So like maybe I will make 5 to 6 videos on function and I will cover more and like everything about function in Python. Okay, so like I will cover call by value, call by reference, why is not both are available in Python, why will call by object reference. Then I will talk how can we give the data like this like the argument and the positional argument, everything. So and then we will solve some problem also. Okay, this function is very important. Even if we talk about the class, we are writing a program, we are making methods. That method is nothing but just function, correct? Function is really important, so I will cover in detail in coming videos. Okay, so till now like just in this video मैंने just रूल बोला था कि मैं इसको बस इंट्रोडक्शन की रख रहा हूँ, आने वाले वीडियोज में मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू.